guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of PrepNuts. Today the date is 5th of June 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. Today the paper is again light and we have only 4 articles from the Hindu and 2 articles from the Indian Express. Front page of Hindu has no relevant article from the exam's perspective, so we shall directly be moving on to our editorial page. Killing Gaja. A pregnant elephant in Kerala was recently killed by a food bomb, which caused a widespread anger among the public on the social media. So, from this news and this article, we are gonna extract some of the facts and points about the conservation of elephants in India. As this killing of the elephant clearly reflects that there is increased human-animal conflict due to the enhanced developmental activities by the humans in and around the habitats of the animals. So, the ranges and the feeding grounds of the elephants have shrunk, because of which they look for the soft landscapes adjoining the forest, such as coffee plantations, tea plantations, cardamom estates, etc. And this results into increased human-animal conflict, जिसमें most of the time animal is the one who becomes a victim. यहाँ पे एक fact mentioned with respect to the research in Karnataka, which showed that 60% of the elephant distribution was encountered outside the protected areas. तो इसी रीजन के कारण एलिफेंट्स ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में एंटर करते हैं, विच रूटीनली प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. सजेशंस यहाँ पे बेसिकली दो मेंशन्ड है. द फर्स्ट इज द माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के लिए कहा था, बट दिस रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लाइंग ऑन द वेस्टर्न घाट्स. एंड इट इज अगेन अ सजेशन नाउ दैट स्टेट्स विद डेंस फॉरेस्ट शुड एटलीस्ट adopt the Madhav Gadkal Committee report's recommendation so as to restrict the human developmental activities in those regions. The second suggestion is better compensation schemes for farmers. जो फार्मर्स एनिमल्स के कारण अपने क्रॉप्स लूज करते हैं, उनको बेटर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए सो दैट दे डोंट किल दोज एनिमल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो इस आर्टिकल में यही कुछ फैक्ट्स और सजेशंस मेंशन्ड है जो हम पिक करेंगे. नाउ वी शैल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल. इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंथेंड टाइज. सो फाइनली द फर्स्ट बायलैटरल वर्चुअल समिट ऑफ इंडिया विद ऑस्ट्रेलिया टुक प्लेस on 4th of June, wherein the ties between India and Australia have been upgraded from the strategic partnership to the comprehensive strategic partnership. Mutual logistics support agreement has been signed between both the countries, number 2, and both the countries have come out with a joint declaration on the shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific, number 3. Also, there has been upgradation of the 2+2 format talks, wherein now the talks will be held at the ministerial level, which previously were held at the secretarial level. So this is point number 4. And also Memorandum of Understanding, or the MOU, on mining and processing critical and strategic minerals has been signed between India and Australia, wherein India will be benefited from the rare earth metals of Australia. This is number 5. So these are the 5 key points and agreements concluded in the India-Australia Virtual Bilateral Summit. So point number 1, that is the comprehensive strategic partnership, clearly shows the level of engagement of India with Australia. Both the countries will now try to engage with each other at all the fronts, that is strategic, defense, economic, trade and technology. और strategic defense ties से related India और Australia ने mutual logistics support agreement sign किया है, like the one India has already signed with the US with name LIMOA, or the Logistics Exchange Memorandum of Agreement, which will allow the militaries of both the countries to use the bases on reciprocal humanitarian and disaster relief cooperation basis. Also, port exercises between both the countries will take place through this mutual logistics support agreement. So MLSA is a great upgradation on the strategic front between both the countries. Now, with respect to the Indo-Pacific region, again a strategic dimension to it has been added. India, Australia are already part of the Quad, which is the quadrilateral grouping including 4 countries, that is India, US, Australia and Japan. So both the countries with this shared vision for the maritime cooperation in the Indo-Pacific have supported a vision of a free, open, inclusive
एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत मेजर कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रिल्म में, स्पेशली इंडिया विद इट्स ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन ओशियन रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया हैविंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पैसिफिक एंड द लिटोरल कंट्रीज इन द सदर्न इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट इज द 2+2 फॉर्मेट। तो इंडिया का 2+2 फॉर्मेट यूएस एंड जापान के साथ है एट द मिनिस्टेरियल लेवल, एंड नाउ इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स 2+2 फॉर्मेट टू द मिनिस्टेरियल लेवल विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल। अभी तक सेक्रेटरीज 2+2 में पार्टिसिपेट करते थे ऑफ बोथ द कंट्रीज। नाउ द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स विल कंडक्ट टॉक्स एटलीस्ट वंस इन 2 years with each other. So ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं of the India Australia first bilateral virtual summit. We definitely will come out with a cracked nets video on the India Australia relations, covering each and every dimension of the relationship between the two countries. For now, you can take note of these outcomes mentioned out here in this article. Now let us move on to our next article. Center launches internship scheme for 25,000 graduates. Government of India has launched a new program, that is the TULIP, which stands for the Urban Learning Internship Program. So it basically is a program to provide internship opportunities to the engineering graduates with smart cities and urban local bodies. The freshly graduates होंगे mostly from the technical courses will be provided opportunity by these smart cities and the urban local bodies through the internship program. तो इस program के through उन graduates को market ready बनाया जाएगा, उनको एक valuable experience provide किया जाएगा, which will make them more competent for the jobs in the private sector. तो यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है कि ये स्कीम में इंटर्नशिप के थ्रू जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है, मतलब जॉब्स की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू गिव एक्सपीरियंस टू द फ्रेश ग्रेजुएट्स बाय इन्वॉल्विंग अर्बन लोकल बॉडीज एंड द स्मार्ट सिटीज। जॉब्स उन ग्रेजुएट्स को या उन इंटर्न्स को अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर ही देगा, बट देयर इज नो गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट अ पर्सन डूइंग द इंटर्नशिप अंडर द ट्यूलिप प्रोग्राम विल गेट अ जॉब। सो इट इज जस्ट अ वैल्यू ड्रिवन पुल स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट अ जॉब गारंटी स्कीम। एंड द लास्ट थिंग आउट हियर इज दैट द ट्यूलिप इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूलिप प्रोग्राम एंड यू शुड गिव इट अ केयरफुल रीडिंग। Now let us move on to the next article. वंदे भारत मिशन set to break evacuation record. तो ये हम बहुत टाइम पहले ही देख चुके थे कि वंदे भारत मिशन is the India's biggest evacuation program. Here in this article it is mentioned that it is soon gonna break the record. जो हमने पहले देखा था उसमें number of repatriates mentioned थे, but सबका evacuation नहीं किया है। जिन्होंने registration किया है उन्हीं का evacuation किया जा रहा है under the वंदे भारत मिशन और the समुद्र सेतु। तो अभी तक नियर अबाउट 3.5 लाख सिटीजन्स ने रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है। And the last biggest evacuation done by India was in 1990. That was done from the Kuwait. यहाँ पे near about 1.7 lakh Indians का evacuation किया था Air India ने on the non-payment basis. Whereas वंदे भारत मिशन में it was expected that India will evacuate near about 4 to 5 lakh Indians from the coronavirus infected countries on the payment basis. Unlike the previous biggest evacuation of India that was of Kuwait, और वंदे भारत मिशन में जिसको भी इंडिया evacuate कर रहा है वो अपना ट्रैवल कॉस्ट, क्वारंटीन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट पे कर रहा है। पेमेंट बेसिस इवैक्यूएशन को लेके गवर्नमेंट का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि दिस अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट इज शॉर्ट साइटेड एंड अनफेयर एज इट शुड हैव डन द इवैक्यूएशन ऑन इट्स ओन कॉस्ट। दिस इज अ वेरी शॉर्ट आर्टिकल, वी जस्ट हैव सिलेक्टेड इट फॉर योर क्विक रिवीजन ऑफ द वंदे भारत मिशन एंड नाउ वी शैल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। नो एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स फॉर नॉट पेइंग वेजेस, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और इसका कंपैरिजन ADM जबलपुर के केस के साथ भी किया गया था फॉर नॉट इंटरवीनिंग एंड नॉट कमिंग आउट टू हेल्प द माइग्रेंट्स एंड द लेबर्स जिनकी फंडामेंटल राइट कंसिस्टेंटली वायोलेट हो रही हैं ड्यू टू द लॉकडाउन। सो आफ्टर वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले इंटरवीन करा था by directing the states and the center government to provide free of cost travel, food and shelter to all the stranded migrants, and also it acknowledged that there are certain loopholes in the policies of the state and center while dealing with the lockdown and the migrants. So in this article we can see that the Supreme Court is again trying to come into the picture, this time to help the employers. So Supreme Court has restrained the government from taking any coercive action against the private employers unable to pay full wages to their workers during the COVID-19 lockdown. ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि एम्प्लॉयर्स के साथ ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि वो वर्कर्स को फुल पेमेंट देंगे, बिकॉज सच अ कंडीशन और एन ऑर्डर फ्रॉम द सेंटर इज क्लियरली वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 40
14 of the employer's right, where they have right to not to pay when the work is not done. So this article has been selected ताकि आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन फील्ड्स में और किस किस रिस्पेक्ट में इंटरवीन करा ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज लार्जली जुडिशरी को लेके एक यही क्रिटिसिज्म है कि जुडिशरी एक म्यूटेड फिगर रहा है पूरे लॉकडाउन में. सो देयर आर वेरी फ्यू इंटरवेंशंस, और वो फ्यू इंटरवेंशंस में से एटलीस्ट मेजर वंस वी शुड बी अप्राइज्ड ऑफ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल. इंडिया वॉज $15 million टू वैक्सीन अलायंस. एक वैक्सीन अलायंस है GAVI, दैट इज द ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, बेस्ड इन जेनेवा, को इंडिया ने प्रोवाइड किया है $15 million इन द ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्टेड बाय द UK. सो द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट आउट हियर फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज GAVI, दैट इज द गावी, और द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, which is a private public partnership on the global health formed in 2000 in Geneva. तो बस एक ये छोटा सा ही आर्टिकल था, and this was the last article from the Hindu. अब हम क्विकली इंडियन एक्सप्रेस के अपने दो आर्टिकल्स देख लेते हैं. आफ्टर ट्रम्प मोदी कॉल, इंडिया ब्रीफ्स रशिया. हमने अपने क्रैकनेट्स वीडियो ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस के कंक्लूडिंग पार्ट में वे फॉरवर्ड ये मेंशन किया है दैट इंडिया शुड लेवरेज इट्स डीप टाइज विद द अदर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स लाइक US and Russia. So you can use this news to substantiate your point whenever it comes to the way forward part of the India-China border tensions. So India has stepped up its diplomacy with major powers, and this is for the first time in the last 20 years that India has discussed this matter of India and China with the US president. But यहाँ पे एक चीज और clearly समझना जरूरी है कि इंडिया कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं कर रहा है. इंडिया just is trying to put up its matter before the other important countries so that those countries can use their own diplomatic channels and solve the India's issue. So what India actually here is trying to bring other countries from the back door in place of direct mediation. तो इस आर्टिकल में बस यही इंपॉर्टेंट था कि ये एक वे फॉरवर्ड को सब्सटैंशिएट करता है और आप इसे एज एन एग्जांपल वहां पे यूज कर सकते हैं बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन. So let us move on to our last article. Despite government's MSME push, entrepreneurs are guarded in their optimism. 4 reasons why. तो यहाँ पे 4 reasons मेंशन है कि MSME से रिगार्डिंग आत्मनिर्भर अभियान पैकेज में इतना कुछ अनाउंस करने के बाद भी there is not much optimism in the market or within the MSMEs. The 4 reasons behind these are: number 1, that MSMEs were troubled already. Lockdown has made things worse. So MSME sector were already down and they were not performing according to their capacity since the demonetization done by the government way back in 2016. Then there was hasty and faulty implementation of the GST, and then there was NBFC crisis last year. तो already इन चीजों ने काफी ज्यादा MSMEs को अफेक्ट किया था, and the lockdown acted as a final nail into the coffin of the MSMEs. The second reason is that most of the MSMEs are dependent upon the non-institutional sources for their finances. और जो गवर्नमेंट ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में क्रेडिट गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करी हैं, वो बहुत ही कम MSMEs को बेनिफिट पहुंचाएंगी, because only 15% of all the MSMEs are linked with the formal financial channels. The third reason out here is that despite of the announcements made by the government, there is high uncertainty with respect to the banking sector कि वो सारे announcements का proper transmission करेंगे till the MSMEs, because काफी सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि banks के end से transmission नहीं हो रहा है of the loans and the interest benefit, because they see a high risk of NPAs, and also the banking officials are fearful of the Prevention of Corruption Act. The last reason mentioned out here is that there is substantial amount of payment already pending, not only with the government's end but also with the other private players who have consumed the final products of the MSMEs but haven't cleared their dues yet. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके PSUs काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं फ्रॉम दीज MSMEs, और क्योंकि MSMEs के प्रोडक्ट्स की अभी तक टाइमली पेमेंट नहीं हुई है, तो दे ऑलरेडी आर फेसिंग अ फाइनेंशियल बर्डन, एंड दीज आर द 4 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच MSME सेक्टर इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू द अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 2.0. So know more about that package, please click on the I button above or check out the link in the description box below. This being the last article of the day, guys, we shall wrap up the daily news nuts of the day. Post your suggestions, doubts, queries in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.